गाइस आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th नंबर सिस्टम। बेसिकली फर्स्टली हम देखेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ फिगर्स और सिंबल्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली नंबर्स होते क्या हैं, कलेक्शन ऑफ फिगर्स होते हैं, सम सॉर्ट्स ऑफ फिगर्स और सिंबल्स जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं इन नंबर सिस्टम। इन्हें हम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इज 1 2 3। नाउ नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या आता है? फर्स्टली नेचुरल नंबर, this is counting numbers are called natural numbers. So guys क्या हुआ, मतलब जो नंबर्स हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कहीं पड़े हुए 10 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, then we use these numbers. These are counting numbers, starts from 1 2 3 and up to infinity. The main thing is natural numbers are represented by n. Now whole numbers. Numbers starting from 0 are whole numbers. तो क्या हुआ मतलब इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 these are called whole numbers. The difference between natural numbers and whole numbers is natural number starts from 1 2 3 and the whole number starts from 0 1 2 3. In whole numbers the additional thing included is 0. Whole numbers are represented by W. होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्स इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, अब हम ये देखेंगे। नंबर्स which are completely divisible by 2 and its multiples are even numbers. So what are even numbers? जो नंबर्स 2 से या फिर उसके मल्टीपल से completely डिवाइड हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8, these are all divisible by 2 and 4 is divisible by 2 and 4, 8 is divisible by 2 4 8, 6 is divisible by 2 and 6. So ये क्या है, सारे नंबर्स 2 से और उसके डिविजिबल से डिवाइड हो रहे हैं completely, so they are even numbers. Now fourth comes is odd number.
numbers which are not divisible by 2 and its multiples is odd numbers. So कौन से नंबर्स? नंबर्स जो कि 2 से या उसके मल्टीपल्स से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड इट्स मल्टीपल. 7 is not divisible by 2 and its multiples. 9 is also not divisible by 2 or its multiples. So odd numbers are those numbers which are not divisible by 2 and its multiples. Now fifth comes is prime number. Numbers that are divisible by 2 and its multiple is prime number. So सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है. What are prime numbers? Numbers that are divisible either by 1 or number itself is prime numbers. These may be 2, 3, 5, 7. Some points are there. 2 is the only even number which is prime, except 2. Every prime number is odd. So हमने अभी क्या पढ़ा? Those numbers which are divisible by 1 or the number itself, जो अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर्स हैं उनके एग्जांपल हैं 2, 3, 5 एंड 7. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. ऐसा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो एक्सेप्ट 2. एक्सेप्ट 2 एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड. 2 को छोड़कर जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे ऑड होते हैं. नाउ what are co-prime numbers? Numbers which do not have any other common factor except 1 are co-prime. So co-prime numbers क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1. Now next is
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which are greater than 1 and not prime are composite. कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं? जो कि 1 से बड़े हैं और प्राइम नंबर्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 10 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसे याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है कि कंपोजिट से हम तोड़ सकते हैं कंपोज्ड। कंपोजिट से क्या आता है? कंपोज्ड। जो नंबर्स कंपोज्ड हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 6 इज कंपोज्ड ऑफ 2 and 3, 8 is composed of 4, 2, और 8 is composed of 2, 2 and 2. Also 10 is composed of 5 and 2. जो नंबर्स कंपोज किए जाते हैं उन्हें भी हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये एक आसान तरीका है याद रखने का। कंपोजिट नंबर्स आर कंपोज्ड, कंपोज्ड नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स, collection of negative and positive numbers are integers. For example, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Also, these are denoted by Z or I. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि कलेक्शन है नेगेटिव एंड बोथ पॉजिटिव का। जैसे कि -3 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 is also integer, 2 is also integer. These are all integers. Some other examples are -5 is also an integer, -4 is also integer, 4 and 5 are also integers. Next comes is पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, दीज में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में क्या है हमारे पास? फर्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर्स which have a minus sign, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर -1, -2, -3। पॉजिटिव इंटीजर which have plus sign, +1, +2, +3, बट हमें ये हर बार प्लस साइन को डिनोट नहीं करना होता है। वी आर सिंपली राइटिंग इट एज 1, 2 and 3. Important point is
नेगेटिव इंटीजर्स को i माइनस और पॉजिटिव इंटीजर्स को i प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, नेगेटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय i माइनस एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय i प्लस। नाउ कम्स इज नाउ हमें अगला टॉपिक क्या देखना है, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ज़ीरो इज ज़ीरो इज नॉन नेगेटिव और numbers starting or integers starting as 0 1 2 are non negative integers. Next comes is rational number. So अगला हमारे पास क्या है, वो है रेशनल। सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स represented as form of p by q are rational. Examples are 2 by 3, 1 by 2, 5 by 2. तो ये होते हैं हमारे रेशनल